Good evening, everyone. Very sorry for this little delay. We are still getting used to this technology, but nice to see all of us are here. Dr. Amit, good morning. Good morning. Good evening. Yatharth is here. Rajat is here. I was just watching Rajat's stand-up comedy about call practice. He was saying that some people in TISA are so fond of call practice that they call at 2 a.m. And that creates some funny situations. So nice. Good. So I think we can begin. Vikas is going to join us, or do you know if anybody else is coming? Should we wait a little bit? I think Vikas is already here. Sonam is here. I think we can just sort of very quickly have a little feedback. Yeah, giving more time for people to join. Yes. So Dr. Amit, you can start asking people for their feedback. Okay. Anybody has any feedback on हिंदी experience? लेकिन हिंदी में जी. Oh, yes. हिंदी में. तो किसी को कोई फीडबैक देना चाहता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सवाल है आपके, any questions, कोई comments, और कोई anybody wants to say anything, क्योंकि आज काफी प्रैक्टिस होगी. We're going to practice ourselves. हाँ रजत, क्या बोलना चाहते हैं आप? सभी को नमस्ते सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो इम्पोर्टेंट फीडबैक है वो कल का है, क्योंकि कल मैं ऐसी सिचुएशन में था जो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं थी। तो वहाँ पर जिस व्यक्ति से मैं रूम पर अच्छे से बात करता था उसका कॉल आ गया और मैं सिचुएशन अपोजिट थी जहाँ पर काफी सारे लोग थे। मैंने ऐसे कभी नहीं किया, तो पहली बार किया। तो तब तक तो एक्सेप्टेंस थी कि चलो ठीक है, बट जब उन्होंने ये बोला ना कि आज तुम बहुत ज्यादा हगला रहे थे, क्यों ऐसा किया है तो फिर अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि मतलब ये होता है, क्या होता है। तो तो फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस एंड आपसे थोड़ा फियर था और वो सिचुएशन अलग थी। फिर वो बोले थे कि तुम काफी लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, बट फिर भी ये है। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक ही सिचुएशन प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा या मतलब कैसे भी करके हर तरीके से अपन को एबल होना है। इसके लिए 1 साल की प्रैक्टिस या अलग अलग सिचुएशन में जाने की नीड ही है वास्तव में। हम जो बोलते हैं कि एक ही सिचुएशन में हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा एक फीडबैक निकला सर, जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, थैंक यू शेयरिंग, थैंक यू आपने शेयर किया। तो मैं इससे एक वे में ये ले रहा हूँ कि जो भी टेक्निक है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक्स फर्स्ट। जो भी हम टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैंसलेशन है, पुल आउट है, जो भी है, इसको इस लेंस से देखने के बजाय कि अगर मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो डेफिनेटली ब्लॉक में नहीं जाऊंगा या ब्लॉक से निकल जाऊंगा, rather than think about it in definitive terms, certain terms, कि ऐसा ही होगा अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो think in terms of probabilities. So that is a bit of a mind shift also, कि likely है कि ब्लॉक से में कम टेंशन होगी या ब्लॉक में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा या ऐसी. Think about it in terms of what's probable. Because these techniques are not going to work every time we use them. That is not the purpose of these techniques either. कि जो भी हम adaptation जो कर रहे हैं, it's not going to work every single time. क्योंकि every single time का मतलब की है कि हमारा problem खत्म हो गया, हम नहीं हटाते, ये सब कुछ नहीं है, right?
we are still people who stammer. So this is not going to work definitively every time. So rather than look at things from the sense of certainty, think about it from the lens of probability. कि अगर हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी, जैसे कि रजत ने बोला कि जितने डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिस करेंगे, जितने लोगों से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कंफर्ट लेवल ज्यादा होगा, स्किल भी ज्यादा होगी, कंफर्ट लेवल भी ज्यादा होगा, देयरफॉर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा. तो looking at it as a gray area rather than a black and white area is, I think, one way to change mindset around these techniques. और जैसे आपने कहा ही है अभी, जैसे कि रजत ने शेयर किया कि अपने आप रियलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा कंफर्ट होगा. दैट्स ऑल. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. और कोई सवाल, और कोई कमेंट? I'm going to name individual people. We want to hear from you. Atharth, how was your experience last week? It was good. So I like these days I'm trying to practice time to things like I talk slowly and all. Like I'm trying to do things around time pressure. Okay, and like previously I used to speak fast that so that I think about the other person that he is suppose how कि कैसे वो चाहता है कि हम जल्दी बोलें, तो इस चीज को मैं अलग रखते हुए मैं अपने स्पीड से बोलने की कोशिश करता हूँ, and it is going good. In that way, I am more able to focus on the techniques that I have to use because I am talking slowly. I have time to think about a lot of things. That is using the right technique on the right word, and so that has made me more focused on the technique part too. So and cancellation is something I still need to practice. I'm still not able to, come to the level of that I have to say the whole word in one breath. So I am more of used to doing the pullout. So that is an feedback. So yeah, that is one So, thing. One thing yeah. I'm not. I'm one thing. एक मेरी problem है. I'm not able to crack jokes that will sometimes because of the excitement or the pressure of landing the joke perfectly, I fumble on words, and that joke like कबाड़ा हो जाता है joke का. Yes, Satendra sir. Yeah, I will recommend watch Rajat's videos Okay, where he's sharing some jokes. okay, sure. I'm going to watch it as well. ठीक है, थैंक यू अथार्थ. तो मैं थोड़ा सा फॉलो अप करना चाहता था आपसे. यू से एक तो पॉइंट आपने बताया कि पुल आउट तुमको ज्यादा आसान लगता है कैंसलेशन के मुताबिक, कैंसलेशन के इन कंपैरिजन विद कैंसलेशन. तो say more. Okay. Why is it easier to do a pull out? What is the hesitation in cancellation? Let's break that down. I think when I'm doing cancellation, my whole breath is taken in the stammering part, and after that I need a pause so that to take to fill my lungs more and then use any techniques. So that is something I need to practice more so that in one breath I can do the stammering too, and as well as the fixing of that cancellation and Why do you have to do the redo in one breath? Why can't you take a second breath? doesn't that make it a pull out? No,
If I stammer on a word, word, that's a cancellation. रुका मैं, सोचा मैंने कि मैंने कहाँ अटका था, उसके बाद मैंने एक और ब्रेथ ली, उसके बाद फील किया कि कहाँ अटका था मैं, फिर ट्राई टू प्रैक्टिस सेइंग इट डिफरेंटली, और then I said it in a different way. It's a whole new attempt. In fact, in a pull-out, it's harder to take a breath in between, but you can do that too. Like certainly in a cancellation, because it's a redo, and you gotta, I mean, what is the T in stop for? The T in stop is to take a breath, take a break, take a pause. I got confused in cancellation and pullout, I think. I think Okay. I am more comfortable in doing cancellation, like In doing the cancellation. That's what I thought. Yeah. part. Yeah. Yeah. Yeah, Yeah. yeah, Yeah. that is something. So let's try taking a breath in the middle of a pullout. So Yeah, if hmm. yeah, so if you did a pull out, I tried to do it in between. I ran out of air, so I took a little breath and I started from where I left off. J- 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 Just like that. I can do just like that. I can do just like that. Hmm. Can I also try one time? बिल्कुल बिल्कुल एक बार we practice all this, लेकिन एक बात मैं I want to remind everybody, these techniques are for us. इसका मतलब यह है कि हमको जितनी अडेप्टेशन करनी है टेक्निक से, कंफर्ट लेवल बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, जो भी हमको करना है, हमें लैटिट्यूड है. दिस इज अडेप्टेशन जो हम कर रहे हैं टेक्निक के द्वारा. वी आर नॉट फॉर द टेक्निक. It sounds weird to kind of say this, but this is for us. This adaptation is for us. We are not for the adaptation. There is fidelity in the technique. There is a way in which you can do it, but there is a lot of latitude as well. You can own this in any way you want. Make it personal in any way that makes sense to you. The point is, are you generating speech that is a little bit more forward moving, less tense, less struggled? Are you feeling more empowered? Are you feeling more confident? These things are more important than the actual, like the technical stuff associated with it. So go ahead and try it in all different ways. Okay. Okay. You wanna try some pull-outs now? Yeah, sure. Okay. Okay. So, my office is in Gu- Gurgaon. Beautiful. That's a Yeah. different time, but that's also good. Okay, keep going. And recently I went to my o- office and I me- m- met a lot of my colleagues. Very Yeah. good. Awesome. The other thing I see you doing in this stuff, you're taking a breath in between, you're doing it in a different way. वो सब that is all. क्या हो रहा है कि जब तुम finally कर रहे हो, तो you're making good eye contact as well. So your eyes are fluttering during the moment of a stammer, which is of course going to happen. Like in the redo, you're normalizing the eye contact. So do the pullouts like that. Sure. Any way you want them to. Yeah. No For problem sure. there. ठीक है, good. Let's talk to आपका क्या experience रहा संजय? सर कभी कभी ना टेक्निक यूज करते करते ना मतलब वॉलेंट्री स्टैमरिंग हम करते हैं लेकिन वो इनवॉलेंट्री बन जाती है तो मतलब वहाँ वो एक्सेप्टेंस वाली प्रैक्टिस हो जाती है अगर मतलब हम स्टैमर करेंगे तो बाकी सर That's right. ये टेक्निक ना अभी हमारे लिए थोड़ी नई है तो थोड़ा
अवेयरनेस रखना थोड़ा भी मुश्किल होता है, तो शायद Yeah, वो धीमे धीमे शायद वो हैबिट आएगी। yeah. तो बाकी सर मेरे एडवांटेज, केस में मुझे लगता है थोड़ा सा पुल आउट थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग रहता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, किस लिए थोड़ा सा बताइए, 1 मिनट, चैलेंजिंग क्यों लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि मैं शायद उस मतलब अवेयरनेस में रहता नहीं शायद कभी कभी। हम्म, तो मैं हम्म, ना कभी कभी जैसे बात कर रहे हैं तो मतलब टेक्निक में भूल जाते हैं कभी कभी, ये रहता है हम्म, बात करते हम्म, करते। हम्म। ये। तो इसका अ, इसके प्रैक्टिस करने का एक तरीका है कि आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में, जैसे कि आपने ट्राई किया कि मैंने आज आज क्या है, April 15th है, मतलब आज खत्म हो गया, April 16 से स्टार्ट करते हैं। आपको आपको आप डिसाइड कीजिए कि आज मैं 4 बार, 3 बार, 4 बार, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिए जो आपको सही लगे। कैंसलेशन, 2 कैंसलेशन और 2 पुल आउट करके दिखाऊंगा। और ये 4 लोगों के से बाद मैं बात करना चाहता हूं। और इन लोगों के साथ मैं बात करने के लिए मैं एक बार कैंसलेशन और एक बार पुल आउट ट्रैक करूंगा इस शब्द के ऊपर। जब आपने इतना फोरथॉट दिया है, इतना प्लानिंग की है, इंक्लूडिंग कि किस शब्द के ऊपर मैं ट्राई करूंगा, तो इम्प्लिसिटली आपने ये भी कमिट किया है कि मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग भी करूंगा, राइट? यू बैकिंग इनटू दोज बिहेवियर्स by planning to do it 4 times a day or 3 times a day की जो भी frequency, you're backing into the right behaviors, you're backing into resisting time pressure, you're perhaps backing into some self-disclosure, you're backing into voluntary stammering, and you're backing into a technique. And it's reasonable because you're only doing it two times a day or 3 times a day, इस person के साथ, इस situation के साथ, इस situation के साथ. That is also keeping it forefront in your mind कि मेरा plan है आज। अगर आपको फिर अगर और अकाउंटेबिलिटी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो अपने लिए एक ट्रैकर बनाइए। एक एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर एक ट्रैकर बनाइए कि इस दिन मैंने जो है कैंसलेशन ट्राई करनी है, पुल आउट ट्राई करना है 3 बार, 4 बार और whatever. Next week, keep the same frequency, raise it or whatever. Now you're also giving yourself data कि मैंने 4 बार ट्राई करने की कोशिश की थी, मैं 3 बार किया। Good, that's 75% success. That's good. And you're also tracking the behavior. तो इस चीज के लिए इंटेंशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंटेंशन बना के प्रोसीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटेंशन नहीं रहेगी, अगर प्लान नहीं रहेगा, then we are left to our own reflexive ways in which we communicate. This is all part of changing something that is reflexive into something that is reflective, something that is happening spontaneously versus something that's happening in a slightly more scripted way. And novel behavior karna, particularly motor behavior, इस type का learn करना, speech behavior learn करना as adults is difficult to do. So keeping a plan like that keeps us into like sharp. Keep 4 times a day, 3 times a day, every day, 4 times. It's like that kind of stuff is very, very helpful. Okay. So, और किसी का, anybody else wants to give feedback, either Sagar or Vikas? Agar, you want to talk about your experience a little bit? Go ahead. Sir, actually, I am also trying to do this cancellation and pull out, but I think I need more practice. Like I try to do in public places or with my friends, but eventually, like I am not able to remember that I used
I have to use this technique, or suppose if I use, so I am not able to do it on the word which I want. Hmm. Hmm. So well, I think I need to practice more on this technique for next month. Yeah, so go ahead and even practice on words which are easier. Normally, normally recommendation यही है कि आपको जो भी word cancellation, जो भी technique try करनी है, cancellation try करना है, pull-out try करना है, whatever technique you want to do, try to do it on words that you find easier first. So don't do it on words where you stammer more, where you stammer more regularly. We all know what those sounds are. We all know what those words are. We have a lot of anxiety associated with a lot of those things. लेकिन we also know words which are easier. तो अगर आपको वॉलंटरी स्टैमरिंग और कैंसलेशन प्रैक्टिस करनी है, पुल आउट प्रैक्टिस करनी है, तो उन शब्दों से स्टार्ट कीजिए, उन साउंड से स्टार्ट कीजिए जो आपको आसान लगता है. Because then you're going to be more motivated to also sort of do it, and you already have more control over it. अब कैसे निकलता है उन साउंड के ऊपर इस सिचुएशन में nobody knows, but it's again the probability that you're going to feel a little bit more comfortable and a little bit more confidence, that is higher. So try it over there. Okay, let's go last to Vikas. Then we'll start with some practice for the next half an hour. Vikas, you want to come off and share a little bit? Yeah, sounds good. And let me have my video on. Okay, hope you can see me now. Yeah. Yeah. So, firstly, I am so sorry for sending me meeting link late. So during this week, I did 10 to 12 times cancellation cancellations in launch meeting and SHG SHG meeting, and in one or two real co conversations, and but I was not able to do pull out, and I need to be more mindful to do that I am thinking to do it now, and I didn't make make videos as well, and I should be doing that, and yeah, so that's my this week's experience. Experience. Okay, good. So cancellations, pullouts, and lots of different SSG meetings, talking to people, and so on. Good. That's a good start, yeah. That's good enough. That's fine. You can also, this is lifelong work. You can do the pull out next week, this week, anytime. You do a combination. अगर pullouts को make up करना है तो cancellation, pullout, combination में practice भी कर सकते हो, anything. एक चीज यथार्थ ने बोला था, which I wanted to follow up on, which is a much bigger question actually. I don't know, maybe we should talk about that a little bit first. Time pressure. So this is a big topic. We're not going to cover everything today. And I wanted to get a sense from people to see, I mean, time pressure is a very common experience, and time pressure is a
big problem for a lot of us क्योंकि हमको बहुत time pressure feel होता है हमको we speed up rate because of that we do lots of crazy things because of that so time pressure resist करने के लिए क्या तरीके हैं we can start the conversation a little bit, talk for about 5 minutes or so. And उसके बाद we can continue this as actually a topic in TOPG. It would be a good topic to explore कि मतलब कि self help group में या TOPG में और या दोनों groups में time pressure resist करने की क्या तरीके हैं तो फोन पे टाइम प्रेशर resist करने का क्या तरीका है फॉर एग्जाम्पल ये अथार्थ I think for a start, we can take pause after every word. Like, speak slowly, we need to take pauses. And for a start, to take that time pressure off, we can take long pauses after every word. Okay. So that uh, that makes the time pressure go. Okay. Go away. Okay. Yeah, try that. Okay, good. What else? और क्या क्या कर सकते हैं Definitely pauses will help. Intentionally put pauses will help. वो भी थोड़ा सा प्लान करना होगा कि मैं आज टाइम प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए दो कॉन्वर्सेशंस में डिलिबरेटली थोड़ा पॉज इंसर्ट ज्यादा पॉज इंसर्ट करूंगा ये कॉन्वर्सेशंस मेरे जो हैं ये कंफर्ट जोन में हैं इसलिए आसान होगा चाहे शायद मैं जिस लिसनर को बोल जिस स्पीकर जिस लिसनर के साथ बोल रहा हूं उनको बताऊंगा कि मैं टाइम प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए थोड़ा सा और पॉजेस लूंगा so preparing for this in multiple ways is the other thing to do it क्योंकि when you set things up ahead of time then you slide into the behavior a little bit more easy. So that's one. What else? Yeah, Yatharth. So this is an experience half an hour ago only. So I had to go somewhere from scooty and my mom was saying something and I had to answer her. So there was time pressure there because I was just going and she was also just going inside. So there was a moment of time pressure where I had to speak fast so that she can also go inside and I can also go outside. But what I did there was I climbed off the scooty, faced her and asked her to face me, and then I answered her. So that is something like I shifted that situation to a situation where the time pressure isn't there. Like I'm shifting the whole scenario so that we can talk with ease, with comfort, with where there is no time pressure. Yeah, great. So again, you intentionally put being reflective in situations where you are reflexive. All of us face those situations, but you intentionally put it aside कि मैं टाइम प्रेशर फील कर रहा हूं अगर मैं सिचुएशन को फिजिकली चेंज कर दूं स्कूटर से उतर जाऊं थोड़ा सा फेस करके अपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा पोजीशन करके ऑल दिस इज फैंटास्टिक ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प फॉर श्योर ठीक है वेरी गुड सो फिजिकली पोजीशनिंग योरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे प्लानिंग टू रेजिस्ट टाइम प्रेशर एक और चीज जो हो सकती है बहुत आसानी से हो सकती है वी फील अ लॉट ऑफ टाइम प्रेशर ओवर द फोन क्योंकि जैसे ही हमने फोन उठाया एक्सपेक्टेशन है कि हम हेलो बोलेंगे या नाम बोलेंगे सम ग्रीटिंग वी आर गोइंग टू गिव immediately there's an urgency to it there's an immediacy to it the first hello or whatever so intentionally taking 2 or 3 seconds before we say hello अपने आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना कि नॉर्मली मैं इस सिचुएशन में एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया फ्रॉम यथार्थ एक्चुअली क्योंकि जैसे कि यथार्थ ने किया कि वो जानता है कि वहां पे टाइम प्रेशर ज्यादा महसूस होता है तो इंटेंशनली वहां पे ज्यादा टाइम लगाएगा
सेम वे ओवर हियर, अगर हम इंटेंशनली जाते हैं, जानते हैं कि फोन पे हमें टाइम प्रेशर महसूस होता है, हमारा रेट फास्टर हो जाता है या जो भी है, intentionally focusing on those two things. मैं थोड़ा और सेकंड लूंगा. And the more you do cancellations, actually, the more you're training yourself to resist time pressure, because redo में time लगता है. वापस जाना, उसको revisit करना, time लगता है. Even cancellation में, I can do a cancellation like that. That's one way to do it. I initiated a redo right away. I can also do a cancellation like that. Pause ज़्यादा लेंगे cancellation में, तो obviously we're taking more time. That's another way of resisting time pressure. ये सब कुछ जो है, ये zone 1 में जो है conversations करने में, ऑडियंस को बता के कि मैं टाइम प्रेशर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पॉज लूंगा. You don't have to say very much. Just basically practice with somebody, saying that that's what you're going to do. Even the fact that you articulate किसी को बताना कि मैं ये करने वाला हूं is a desensitization exercise, is a planning exercise, and then this practice. And all these things are much easier to do in your comfort zones that are harder to do in a like less comfortable zone. So even if you have to spend the next week doing it all in your comfort zone, that will prime you for doing it in a different way where the challenge is higher. Or koi idea, any other creative ideas on resisting time pressure? Or kuch? Rajat, that was a cancellation with the pullout. Go ahead. सर इसमें मेरे अकॉर्डिंग ये Good pullout, boss. Keep going. लगता है कि सपोज करो यदि हमारे पास काफी रेसर वाली सिचुएशन है, तो Very good. उससे पहले अपन थोड़ा सा ये माइंड, क्योंकि ये सारा काम माइंड ही करता है, ये जो अवेयरनेस होती है, तो थोड़ा रुकते और अपन ये माइंड को बताएं कि आगे आने वाले कॉल में या चाहे मेरे मेरे को स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं है, प्लान है, बट मैं इसको अवेयरनेस के साथ करूंगा. और इसमें माइंड को ट्रेन करना है कि इस वाली सिचुएशन में कि अपन को कैसे अपन इसको डील कर सकते हैं. तो जैसे अभी मैं करता हूँ, तो यदि मेरा माइंड पहले से प्रिपेयर है, जैसा कि आपने बोला था प्रिपरेशन, तो माइंड सेट यदि पॉजिटिव है, अच्छा है, और हम माइंड बिल्कुल तैयार है, तो वो कॉल बिल्कुल अच्छी जाएगी. और यदि हमने हड़बड़ा कर कॉल उठाया और हमारी कोई कुछ अपन ने प्लान नहीं किया, ना ही माइंड सेट पहले से प्रिपेयर है, तो श्योर है कि वो संभावना है कि वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाए सर. ये तो इसके कॉल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग था. और मेरा एक पुल आउट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बट मैं उसको बाद में जी. पूछ लूंगा. नहीं, अगर अभी चांस है आपको, पूछ लीजिए. सर इस पुल आउट में जो आवाज वाली आती है, जैसे मैंने आपको अभी ऑब्जर्व किया कि इसमें आवाज कंटिन्यू रहती है, तो मेरे मन में ये था कि आवाज की जो फ्रिक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए, जैसे या फिर में, तो मतलब वो कम ज्यादा होती रहे, कम ज्यादा हो सकती है, या फिर वो एक समान भी रह सकती है. ये मेरा तो क्वेश्चन था. किसी दूसरी ट्राई इट इन डिफरेंट वेज. ब्रेक करके दिखाइए, ब्रेक करके कीजिए, सामान टेबल रख के कीजिए. ट्राई इट इन मेनी डिफरेंट वेज. इसका कोई सही आंसर नहीं है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रयोग. जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है हमको, हम इसके साथ वी शुड फील फ्री टू प्ले विद इट. इसके साथ खेलना है हमें. आवाज का जारी रखना जो है पुल आउट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनलेस
जैसे यथार्थ ने बोला था मीटिंग के बिगिनिंग में that he finds it difficult, he runs out of air, तो he wants to take a breath within the pull out. Obviously जब आप breath लेंगे, अगर उस टाइप से पुल आउट करेंगे, सांस लेंगे, मिडल ऑफ स्टैमरिंग में अगर आप सांस लेंगे तो ऑब्वियसली सांस तो आवाज नहीं जाएगी, जारी जारी नहीं रहेगी. दैट्स गोइंग टू बी द इफेक्ट. लेकिन अगर वहां पे अगर आपको ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, डू इट दैट वे. लेकिन जो रजत ने सवाल पूछा है, अगर आप आवाज जारी रखनी है, अगर आप जारी ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है. अगर आप जारी ऐसे कर सकते हैं, however you do it, the point is अगर आवाज जारी होगी तो ग्लाइड जो होगा, प्रोलोंगेशन बुला लो, ग्लाइड बुला दो, जो भी बुला लो, वो आसान होगा. वो that is going to be an easier transition to make. If you turn the voice off, then you have to turn the voice on again, which is also possible, also fine, but it's a different experience. Motorically, it's a different experience. Okay, good. So let's practice. Practice, yes. Should we practice a little bit? Okay. Let's start with Sanjay. तो कुछ बताइए अपने दिन के बारे में, संजय, अपने काम के बारे में या दिन के बारे में, जो भी बताना चाहते हैं. मैं आपको 2 सेकंड पे के टाइमर लगाऊंगा आपके ऊपर, आपके नॉट आपके ऊपर, बट मैं 2 सेकंड टाइमर लगाऊंगा और उसमें कुछ बताइए. और आई वांट टू सी, वी ऑल वांट टू सी 2 cancellations and 2 pullouts. 2 कैंसलेशन और 2 पुल आउट, और प्री डिसाइड कीजिए कि किस शब्द के ऊपर होगी. इसलिए उस शब्द के ऊपर अगर आप वॉलंटरीली स्टैमरिंग कर सकते हैं पुल आउट प्रैक्टिस करने के लिए, कैंसलेशन के लिए, यू कैन डू दैट. अगर स्पॉन्टेनियसली स्टैमरिंग हो रही है, यू कैन ऑल्सो डू दैट इन सम कॉम्बिनेशन. प्ले विद इट. वन मोर थिंग, resisting time pressure, back to that topic again one more time. Voluntary stammering is also a way of resisting time pressure, because सर you can मुझे control तो how you stammer. अभी से टाइम प्रेशर फील हो रहा है. Okay, whenever you're ready, whenever you're ready. हाँ 2 सर. मिनट का टाइमर मैंने अभी आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ. 1 2 3. हाँ, स्टार्ट. टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. सर मैं पहले एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था एज अ क्वालिटी इंजीनियर. गुड. पुल आउट नंबर 1 डन. एक और. तो सर वहाँ मैं री 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 रिसिप्ट रिसिप्ट क्वालिटी इंजीनियर के तौर पे काम करता था. Good. तो Was सर that a cancellation or a pull out? क्या था सर आपने? कैंसिलेशन. Okay, okay, that was a cancellation. तभी सर मैंने उसको One. री 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 रिपीट किया Okay, था दोबारा से good, कैंसिलेशन. excellent. तो सर वहाँ मुझको ना 1 साल हो गया था एज अ रिसिप्ट क्वालिटी इंजीनियर काम करते करते. तो सर मेरा जी. वहाँ प्रमोशन कर दिया एज अ स स स स स सप्लायर सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस. तो सर वहाँ क्या है, बहुत सारे सप्लायर को हैंडल करना पड़ता था. तो मैंने मना कर दिया कि मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि वहाँ लोगों से बहुत ब ब ब बातचीत करनी पड़ती थी. और Good pull out. Mm-hmm. और सर Mm-hmm. वहाँ एज अ क्वालिटी पर्सन काफी ई ई ई ई इशू भी होते थे, जिसके कारण है ना Mm-hmm. बहस बहुत ज्यादा होती थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था. और सर Mm-hmm. मैंने अभी 1-2 महीने पहले ये ऑब्जर्व किया है कि मुझे जब भी मेरी ब ब ब ब ब बहस होती है या मुझे वो वो गुस्सा आता है, तो मेरी Mm-hmm. स्टैमरिंग एकदम से वो वर्स्ट हो जाती है. बहुत ज्यादा इस 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 स्टैमरिंग होती है और मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. Okay. Okay, good. You did दो तीन तो डेफिनेटली पुल आउट किए थे आपने, यस और सर. एक तो कैंसिलेशन की थी. Okay, good. तो
तो उस टाइप के सिचुएशन में लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर. तो उस टाइप के सिचुएशन में जब बहस होती है, जब आपको ज्यादा टाइम प्रेशर महसूस होता है और आप ज्यादा बोलना लगते हैं, the the reason that stammering increases in those situations usually is because there is a correlation between language complexity and speech motor work. कि अगर जब हम कुछ चीज ये हमारी काफी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. When we speak long, when we say something that is propositionally loaded, content में बहुत loading है, and we are speaking in multisyllabic vocabulary, क्या होता है कि हमारा rate जो है becomes faster. So there is a correlation. Research has shown this over many years. There's a big correlation between the frequency of stammering behavior and language complexity. What you're reporting is a direct outcome of that. तो इसलिए अगर आप किसी के साथ बहस भी करना चाहते हैं, लेकिन आप डिसाइड कर लें कि मैंने 3 पॉइंट बनाने हैं, 2 पॉइंट बनाने हैं या 3 पॉइंट बनाने हैं, and pre-decide those particular points, then at least you know the content of what you want to say, the highlight of what you want to say. Because the problem happens very often that we are speaking fast, we're also formulating language. So all this is complicated for our systems to take. We have, biologically slightly different wiring in the system. So it's a little bit difficult for us to coordinate. तो अगर आप जो भी चीज बताना चाहते हैं उसको डिसाइड करने की मैं this is complicated for our systems to take. We have, biologically slightly different wiring in the system. So it's a little bit difficult for us to coordinate. तो अगर आप जो भी चीज बताना चाहते हैं उसको डिसाइड करने की मैं ये पॉइंट बोलने वाला हूं. These are the 2 or 3 points I want to make. And by the way, this is the situation where I feel more stammering, where I feel more less under control. I feel my speech is more tense. Therefore, I need to resist time pressure here as well. So again, this is all about planning. जैसे कि रजत ने बोला, this is all tricking the mind, training the mind. So backing into those behaviors as well, thinking in terms of like, I have to pre-decide the points I want to make, and I want to very intentionally in this situation use a pullout. That will also be helpful. Whether you can do it or not in one situation or not is a whole other situation. और अगर आपको किसी के साथ किसी कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ स्टेज करना है, रोल प्ले भी करना है, you can also do that with a TISA member or anybody else. This is the kind of argument I'm likely to have. Tomorrow there's a meeting at work. This is the kind of point that might be raised. This is the kind of way I want to push back. This is the thing I want to say. Let me practice it with the TISA member. So role plays could be the other way to sort of resist it. कभी कभी है ना, वो जो सिचुएशन होती है वो इतनी ओवरवेल्म होती है ना कि ब्लैकआउट हो जाता है माइंड में. Sure. कुछ निकलता ही नहीं है मुंह से. एकदम एकदम हैवी ब्लॉक जैसे बोलते हैं ना, वहां चले जाते हैं कभी कभी. Yeah, that will also happen. So I'm not saying this is a foolproof way to deal with it. I'm saying the more you do these things, the more likely it is that you're going to feel more comfortable over time. That's all. Okay, great. Let's go to Sagar. अगर I want to hear from you, 2 मिनट का टाइमर पे कुछ अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए. और ये सेम एक्सरसाइज है. आपको 2 कैंसलेशन करनी है और 2 पुल आउट करने हैं. डिसाइड कीजिए किस शब्द के ऊपर आप ये टेक्निक यूज करने वाले हैं. और अगर स्पॉन्टेनियसली स्टैमरिंग होती है तो यू कैन डू इट देन, बट यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन अ वॉलंटरी स्टैमर. So, sir, do you have any topic on which I can say? No, why don't you select a topic? Why don't you choose something you want to talk about? Can be anything. Describe the place you are in. Why don't you do Describe the that? place you are in. Looks very That's green. simple. That's simple. Yeah. Okay.
Sir, right now I am near to beach. I was went to workout, and after the workout I come near to the beach. If it's a meeting, so sorry. Uh, I'll do it once again, sir. Sorry. Of course. Yeah. As often as you want. Sir, actually, every evening I do workout, and after finishing the workout, I come near to beach to re relax out, and to today it is the You went mute. You went mute. You went mute. You're on mute, Sagar. Sagar? Sagar, you muted yourself. Ek second. Ruko. You muted yourself. Okay. So you were talking about the workout at the beach and so on. I want you to do one thing, all right? So I want you to choose 2 words, just 2 words in the next thing that you're going to say. Tell me about your workout if you want. You can talk about your workout. What is your workout? And then choose 2 words, pre-decide 2 words on which you're going to do either a cancellation or a pull out. Pull out. That was a cancellation on a pull out. So see if you can do it. See if you can choose 2 words ahead of time and just do a pull out on those words or cancellation. I have to do 2 cancellations. Or you can either do 2 cancellations or do 2 pullouts or do 1 cancellation and 1 pullout. Your choice. Use any technique, but use it on 2 words. Yeah, okay. So I have my own schedule. Good. That's a pullout. On every Monday, I Okay. do with back and bicep workout. Okay. Tuesday, I go with cardio and abs workout. Okay. And on Wednesday, I go with shoulder. On Friday, I go with tricep. And on the Friday, I do legs workout. Okay. And Good. Saturday, I keep for the rest. And even Sunday. Okay, excellent. Very nicely done. Excellent. And what's happening is when you're doing the pull out, you're also maintaining good eye contact. That's sort of the other thing. Okay, excellent. Very nice. Let's go to Vikas. So what should I share about? I'm just thinking. जो भी बताना चाहते हो आप, जो भी, whatever catches your interest. Plus, I want to see 2 pullouts and 2 cancellations. Actually, you said you weren't able to, you were able to do one but not the other, right? क्या बोला था? You said something earlier. I was able
A, able to do cancellation, Okay. but was not able to do pull out. Okay, that you just did a pull out on that. You just did a pull out on pull out. Okay, do one cancellation and do one pull out. How was your day at work today? Okay. So the day was quite packed. Okay, Pa- stop. Don't move forward. That was the real stammer on pack. That was the block, right? Yeah, Okay. I was doing voluntarily, but converted Oh, to involuntary. involuntary. ठीक है. Even more. That's gold. Let's go back and let's go back and examine where did you feel the tension? Talk me through it. Packed was the word. Yeah, Your day was packed. yeah. So I think tension was in this part, Mm, and I was not breathing mm. as well. Okay. So what are you going to do differently next time? Talk to me about how you're going to approach that word in a different way. Okay. So last time I was thinking to do cancellation, and so this time what I can do, why like after going in stammer, I Mm, can like firstly I'll go in the stammer, and mm, then I'll slowly pull out of stammer, mm, and take a breath, and mm. then and then say that words with say bouncing te technique. Okay, try it. Okay. Uh, Today the day was quite pa- 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 packed, Okay. and Okay. So what did you do differently this time? this time I didn't say the word. Hmm. I And when there was lot of pressure here, I Mm-hmm. just released the pressure, Mm, came to the first po point of saying the word, mm-hmm. then took a breath, and Mm. then started to say that word again with the bouncing. Very good. You also resisted time pressure. There are a couple of things that you did that were implicit, that were implied in what you did. Very good reflect, very good awareness. I made you aware of what you did and what you're going to be doing differently. And then when you did it differently, I also asked you what you did. So good. A lot of reflection here. You also resisted time pressure when you just did that. Okay. You also, I want you to do that word again. Do the word packed again. Get stuck in the same way again. अगर voluntary stammering होती है, spontaneous होती है, do it all again. ठीक है? लेकिन इस बार keep eye contact with the camera. Okay. Okay. So the day was quite pa 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 packed. Okay. Good. See, that is, yeah, Athar, that is an example of a pull-out where there's a breath in between and he is doing it differently. Again, nothing right and wrong about it. He could have also done act, but
but he did it in a different way. That's good too. Jo bhi hai, it's all good. So don't get hung up on is this the right way or the wrong way or whatever. Certainly keeping the voice on is the right way, because if you don't keep the voice on, then it's difficult to do the prolongation because you don't have voice. That's the only thing that one has to be mindful of. But even then, there's a lot of latitude. Okay, good. Excellent, Vikas. Keep going. So just want to ask one thing. When we go in the block, and then usually what I have seen with me, then like uh, I have like my breathing is out. Like to say any word, I need to take some breathe. And then in that case, when you are saying that we can say the word without taking the breath as well. And so just want to know how can that be done? Yeah, so there are two ways of doing it, right? One way is you said you can't do the glide out because you're out of breath. That will happen. So then take a breath. There will be some words that you can do it differently as well. So do both. Try a pull out. अगर उसको अब इसको pull out बुला लो, have cancellation बुला लो, जो नाम देना है इसको दे दो, right? But you can also do I'm stuck in a particular word. Now I didn't need a breath because the sound that I began was not towards the end, like I had enough air. So when you have enough air, then you can do a glide. When you don't have enough air, then you take a breath. Each one is fine. Okay, say more. Let's do one more. Let's do another pull out. Okay, same word or नहीं, some different other word? word. और कुछ बताओ, Okay. कुछ बताओ, और कोई शब्द यूज करो, लेकिन डिसाइड करो थोड़ा सा कि किस शब्द के ऊपर मैं पुल आउट करना ट्राई करना चाहता हूँ. Okay, so let me continue the story then. Sure. And then I went to office early. I'll say it one more time with a different way then. Go ahead. I went to office early. Okay, that's another way to do it. Good. Yeah. Awesome. Keep going. I went to office early. See, now you didn't need to take a breath, right? You just glided out of it. Yeah. So then I was sensing then in prolongation somehow breath management can be done. Yeah, because prolongations are easier to do on sounds which are not called plosives. Plosives का मतलब है कि ब, ड, ग, द, ये सब जो sudden release pressure जो होता है, that's where it's harder to do. लेकिन जब vowel है या और कोई consonant है जिसके ऊपर sound already जारी है, जो sound जो है उस sound के ऊपर prolong हो सकती है, so obviously prolongation is going to be a little bit easier over there. It's harder to do these prolongations on words like pa, ba, ga, da, because they have an abrupt beginning. Like in any other consonant, you can always sort of do it. Okay. Good. Thank you, Vikas. Excellent. Let's go to Rajat. आप और हम थोड़ा सा practice करते हैं. श्योर सर. सर स्टार्ट करें? बिल्कुल जब भी.
मैं 2 लाइन आपके लिए मैं चाहता हूं कि कोई कम से कम 4 दिखाइए मुझे, 4 दिखाइए मुझे। 4 पुल आउट सर, है ना? कम से कम 4। ओके। तो सर मैं 2 लाइन बोलूंगा, मैं उनमें कोशिश करूंगा। हाँ, बोलो। आपको जो करना है वह अपने बलबूते ही करना होगा। उन विचारों विचारों और संसाधनों को लेकर लेकर जो आपको उपलब्ध हैं। एंड सेकंड लाइन है, सफर हमेशा ज्यादा मनोरंजक होता है मंजिल पर प, 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 पहुंचने के बजाय। सर मैंने इन 2 लाइनों में पुल आउट कैंसिलेशन है, लास्ट में पहुंचने पर हाफ कैंसिलेशन किया। तो ये है। शानदार, 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 वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो एक्सलेंट। तो आपने स्क्रिप्टेड किया था, बाकी सब लोगों ने रीड करके नहीं बताया, आपने स्पॉन्टेनियसली बताया। तो अभी 2 मिनट और बात करते हैं आपके साथ। हम्म, स्पॉन्टेनियसली कीजिए, हम्म, रीडिंग प्रैक्टिस में मत कीजिए, स्पॉन्टेनियसली कीजिए। आपको तो स्पॉन्टेनियस स्क्रिप्टेड ट्राई करते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, लास्ट मंडे बताया था, वो ट्राई करते हैं। स्क्रिप्टेड स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि मैं ये जो भी मैं बोलना चाहता हूं, इसमें जो है 2-3 शब्द तो डेफिनेटली आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सैंडविच कैसे बनाते हैं, तो सैंडविच में कोई प्रिडिक्टेबल वोकैबुलरी तो डेफिनेटली आएगी। एक ब्रेड होगी, एक चाकू होगा, मक्खन होगा, और मे बी एक और शब्द होगा। तो जब भी ये शब्द आएंगे, 2 मिनट में आप मुझे बताइए कि सैंडविच कैसे बनाते हैं। जब भी ये शब्द आएंगे, आप उन्हीं शब्दों के ऊपर पुल आउट प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मक्खन और ब्रेड और चाकू, राइट। जब भी ये शब्द आएंगे स्क्रिप्टेड वोकैबुलरी में, आप पुल आउट ट्राई कीजिए। हाँ सर, मैं इसको एक अदर एग्जांपल पर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल जब बिल्कुल, हाँ हाँ, दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। हाँ। ये ये एग्जांपल है, मैं एक एक लाइन में मैं ब्रीफ देना चाहूंगा। एक हम्म मैदान, मूवी का एक टीम है और एक कोच है, और फिर उसने कैसे फुटबॉल में 1962 में एशियन गेम्स में जीत हासिल की। हम्म तो आ, हम्म, मैदान मूवी में एक कोच होता है, वो काफी स्ट्रगल स्ट्रगल क्रिटिसिज्म झेलता है एक उद्देश्य के लिए, कि हमारा देश वॉलीबॉल वो फुटबॉल में नाम होना चाहिए। सारी टीम उसने अपने कोडिंग चयन चयन किया। काफी डिफिकल्टी आई, लंग कैंसर, फिर भी लड़ता रहा। और एंड जाने से पहले 1962 में एक टीम भावना, एकता के दम पर
फुटबॉल एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, जो अभी तक उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। ये थी सर। Okay, excellent, excellent. तो आपने दो चीजें की। एक तो आप ऑलमोस्ट हर एक शब्द के ऊपर आपने पुल आउट किया, ऑलमोस्ट एवरी वर्ड। सेकेंडली, आपने पुल आउट जो किया वो टिपिकली किया जब शुरू के बिगिनिंग में, जब आप शुरू करते हैं तब वहां पे ज्यादा किया। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हकलाना जो है ये फ्रीक्वेंसी में है, जो a lot of stammering happens at the beginning of utterances. It's not that it doesn't happen in the middle of utterances. We have trouble initiating and we also have trouble transitioning across syllables. Motorically ये हो रहा है. Lekin at the same time, most of the stammering is concentrated at the beginning of utterances. A lot of research shows that. तो आपने उसको compensate करने के लिए beginning में किया. And you didn't get on every second word, which means that you're also getting a lot of practice, both with voluntary stammering and with pullouts. Wonderful. So hopefully this was helpful, guys. Hopefully this was a useful thing. And we'll decide what we want to do next week. Do you want to talk through that a little bit, Dr. Srivastav, about next week? I will see what is the next module, but Okay. whatever it is, we can talk about that using these techniques, because obviously we all need a lot of practice, and definitely we need a lot of practice. So whatever is the theme, whatever is the agenda, we'll continue Okay. this practice of using the techniques in spontaneous 2 or 3 sentences. And I just want to add one more thing. Because this often we often get this feedback that I started to do voluntary stammering and it became involuntary, and the person talking about it looks so dejected and surprised and Yeah. and unhappy. Yeah. So I just want to share this thing, that I am doing a lot of gym and I'm eating very sensibly. I don't drink. I take enough sleep. So I'm doing everything according to the book. But does it mean that I cannot get COVID or die in a road traffic accident? Does it mean that I will never die? Of course not. I mean, so doing gym, eating sensibly, doing all the healthy, adopting all the healthy habits, it doesn't mean that we will live forever. But still, we should do these things, because as long as we live, at least we can enjoy the healthy lifespan. So same applies to our practice and to these techniques also. These techniques are no guarantee that you will never stammer. Yeah. These techniques are no guarantee that you will succeed in every situation. Yeah. So should we stop using these techniques? Obviously not, because the purpose of the techniques is to give us a little comfort while we are talking. If you recall your stammering in early years, it used to leave you exhausted by the end of the day. I mean, in my own case, that was the truth. In fact, I went to the doctor with this complaint that by end of the day, I'm getting very tired and I'm still not, and I'm nowhere near male menopause. So why am I getting so tired? Just conducting couple of meetings. So then, of course, we began talking about stammering also. He discovered this. So that is the thing, that we are learning these techniques so that the act of talking is less tiring and is less anxiety causing, less problematic for us. That's the whole thing. It is no guarantee that you try a little voluntary stammering and it will not become involuntary stammering. But the thing is, if you practice these techniques, you will be less ruffled by that. Yeah. आप घबरा नहीं जाओगे, परेशान नहीं हो जाओगे, दुखी नहीं हो जाओगे, अरे क्या हो रहा है. So that's the whole game here. We are not trying to make you a perfect speaker. We are trying to make you a speaker who is at ease with himself. Yeah. Yeah. I think it's very important to not lose sight of that. I think that's very important to be able to emphasize it and not lose sight of that.
I also want to say कि ये जो behavior हम सीख रहे हैं ये novel behavior है. Novel behavior जो है उनको हम लोगों को सीखना इस एज में सीखना as adults is very challenging. Any novel behavior to learn as adult is very challenging, and particularly stammering. Doing stammering differently is even more challenging because this is a very conditioned behavior. We've been practicing this for all our lives. तो ये सोचना कि मैं voluntary stammering करूंगा वो असली नहीं होगी वो voluntary रहेगी is also not a very realistic expectation. But to Dr. Srivastava's point, the more you do it, the better you're going to feel, the more confident you're going to feel, and therefore this is going to develop more momentum to keep doing it in one situation, another situation, another situation, another situation. Over time, it has taken us how many years? 30 years in some cases, 40 years in some cases, 20 years in some cases. We've been doing this behavior for a very long time. So it's not going to, like, rewiring is not going to happen within like 1 month or 2 months or whatever. You have to engage in it in a regular kind of a way. So yeah. All right. So one special homework for your thought. एक second, Dr. Srivastava. Just 1 second. Yeah. One special homework for your thought. तो अर्थात आपने बताया था कि you're finding it difficult to kind of do this in jokes. So that's your homework. I want you to try something with it, try any of these techniques with a joke and see how it lands. Try that Can one I because can I crack a joke? It is a joke that I just failed to crack 2 days ago. yeah, If I can crack the joke again, sure, if I can try to crack the joke again. sure. So yesterday only I went to the doctor, and there a couple was there. They were 60 to 65 years old, and the uncle had a great sense of humor. So there was auntie that had come to the doctor for some throat infection or something, and the husband cracks the joke and says to the doctor that uh, uh, g- 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 गला दबाने से क्या कुछ फायदा होगा इनका. And the doctor had a और अच्छा sense of humor. He says ग- 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 गला दबाने से फायदा नहीं होगा, घु- 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 घुटने दबाने से फायदा होगा. Not गला दबाने से. Right. Good one. Nice. I just want to give one idea to Yatharth and Rajat. You should get together on a Zoom meeting, just two of you, record it also, and take turns at sharing jokes. Because That's a good sometimes, idea. Yeah. because sometime in funny company, you perform better. Yeah. Definitely we will do it. All right, And I guys. just want to ask one Yeah. last question from Vikas Ranga. Vikas, sometime back when you were doing all this, as Dr. Amit was saying, now try this, go back to this word. My day was packed today. So when you were doing that, did it strike you that it is becoming like a mindfulness exercise? You have to become very mindful. It was something like doing a body scan in Vipassana, paying great attention to your small toe, and then the toe next to it. Did it feel like a mindfulness exercise? Yes. Like when we mostly speak Huh. otherwise, Huh. then our mindset is not so much in the present moment. And like what I have realized, when the mind is more in the present moment, then we love that moment really well. And yeah, and there's like one last line. And I think so, like when we take a pause to reduce time pressure as well. If we go in a pause and just love that pause time, I am in pause, and then saying that one more word, Yeah.
then Yes. we usually love, and when we love speaking, then someone who is listening, they will like usually like that time spending. Yes, yes. So Good as point. Vikas has already said it, I just want to emphasize this point that you can practice these techniques thinking that you are practicing a speech technique. But you can also think of the whole thing in a new frame where you can say, I'm doing a mindfulness exercise. I'm trying to fall in love with this pause rather than be frightened of this pause. So the whole thing can become a mindfulness exercise, and that would put a new spin on the whole thing. You will see the whole thing in a new way. And of course, it's a mindfulness exercise, definitely. There's no doubt about that. You'll become more mindful, more careful. So thank you so much. I just wanted to explore this angle. Back to Dr. Amit. Yeah, I was just going to say, thank you for saying that. I think just like mindfulness practice can be done, an hour a day or 2 hours a day. If you're a Vipassana practitioner, you can also to do it 5 times a day for 5 minutes or 6 minutes or whatever. There are so many variations, right? The other equivalent I find of with this speech motor practice, which is small bursts of practice done regularly across multiple situations, just like Dr. Srivastava was talking about the mindfulness frame. The other frame is singing, because singing में क्या होता है? We can sing anytime, right? We can sing a short song. एक छोटा सा गाना गाना है हमें, तो हम वो सेम गाना शावर में गा सकते हैं, सेम गाना बाथरूम में गा सकते हैं, सेम गाना इस सिचुएशन में गा सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड एंडेड प्रैक्टिस. सिंगिंग इज नेचुरली क्लोज्ड एंडेड प्रैक्टिस. तो अगर आप सिंगिंग का फ्रेम ले लें, माइंडफुलनेस का फ्रेम ले लें, तो ये इट मेक्स इट a little bit easier to like attach the technique. So great points of reference. All right, guys, it's 1.5 hours, so I need to go. But I will see you again on Monday. And Dr. Srivastava will come up with some exercise, and we'll go from there. I'd love to take your comment or questions, Sagar, but I have to go. So I will see you next week. Okay, bye. Thank Bye, you so guys. much, Dr. Amit. You're welcome. You're welcome. See you next week. Bye. Thank you so much. Take care. Bye. सागर, आप पूछिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं? अगर आप पूछ सकते हैं, बोलिए. Sir, actually, I have the question. क्या ये क्वेश्चन आप गाना गा के पूछेंगे, गाते हुए? क्योंकि आप बीच Yes. में हैं, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. My So start. question is that I want to practice this technique, cancellation and pull out, with my friends. So how can I explain them what will be the outcome of this exercise? There can be different levels of friends and their ability to understand and empathize. At one level, you can simply say to them that, look, I'm getting treatment from a speech therapist from America online, and this is what he has asked me to do. End of chapter, end of verse. बात खत्म हो गई वहां पे, है ना? अगर मैं अपनी नाक में दवा डाल रहा हूं, तो मुझे क्या एक लोगों को बताने की जरूरत है कि ये वासो कंस्ट्रिक्टर कैसे काम करता है और नाक में कैसे वो करेगा? मैं अब इतना बोल दूंगा, भाई मेरे को एलर्जी है, मैं नाक में दवा डाल रहा हूँ, बस बात खत्म. अगर लेकिन आपके ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं कि हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू, then you can tell them that, look, stammering doesn't kill people. What really tires us is the mechanical struggle of getting the word out. So I have learned this technique which eases that struggle a little bit. तो वो जो बार बार वर्ड पे जो हम हकला के जो होता है ना कि ब्रेक भी लगाया हुआ है और गैस पेडल पे पांव भी दबा रहे हैं. आपने कभी ऐसा किया कि ब्रेक भी दबा दिया है और इंजन को रेस भी दे रहे हैं? तो क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है और माइलेज खत्म हो जाती है गाड़ी. ठीक है, तो हकलाने में यही हो रहा है. यू आर स्ट्रगलिंग बट नो वर्ड्स आर कमिंग आउट, एंड इट्स एग्जॉस्टिंग यू इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो. सो यू कैन से कि स्टैमरिंग में ये असली प्रॉब्लम है, और उसको दूर करने के लिए मैंने ये टेक्निक सीखी है, मैं इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इससे जो है मेरा स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा. तुम्हें शायद ऐसा ना लगे,
डोंट वरी, लेकिन बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी. You can say that. And if they're intelligent people like you, I'm sure they will understand. ठीक है? And if they don't understand, give them that line. मेरा अमेरिकन डॉक्टर ने मेरे को बोला है, खबरदार. You can't question my therapist. Any और कोई सवाल किसी का? कोई फीडबैक, कोई सवाल फटाफट? वैसे मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए जॉइंट प्रोडक्शन from Rajat Dhakad and Yatharth, where they will, two stand-up comedians in the bar at the same time on the same stage. Definitely, sir. Share- Definitely. Sharing jokes. No holds barred. Definitely. उस किस्म का एक रिकॉर्डिंग जो है वो आप बनाइए, और ये आराम से जूम में कर सकते हैं आप. और आप लोग खड़े होना, बैठ के मत करना, खड़े होके करना, हाथ वाथ हिलाना, मुंह बनाना, और जैसे भी जोक है वो सुनाना. श्योर सर. हाँ, मगर फैमिली जोक्स होने चाहिए, है ना? ऐसे जोक्स ना हो कि जो हम फैमिली के साथ ना देख सके. ओके सर. And so talking about what you were saying that you can explain to the friends. In my experience, I have seen that people actually are interested in how stammering works and how what is the psychological component, what is the physical component. People are actually genuinely really interested in it. It's just that we hide it, so they are also hesitant to ask and talk about it. If we come up with it, if we are direct about it, people are actually very direct about it and ask us, why is this happening? How is it happening? How are you helping yourself? And it helps to, maintain that bridge and, talk about it. और बहुत सारे आप, अगर आप इफ यू आर गुड विद लैंग्वेज, इफ यू आर गुड विद विद एग्जांपल्स, आप समझा पाएंगे अपने दोस्तों को. आप उसको कह सकते हो, जब कोई आपका दोस्त बोलता है ना कि यार तेरा कॉन्फिडेंस लो है तो इसलिए हकलाता है, तो आप उनको बोलो कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है. मान लो किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो क्या तुम उसको ये बोलोगे कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाएगी? नहीं. तो जैसे मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वैसे स्टैमरिंग भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. मैं कई बार जोक में आज से कुछ साल पहले लोगों से कहता था कि किसी को बुखार आया है तो क्या तुम वहां जाके ऐसा बोलो, क्योंकि बाइबल में कहीं पे लिखा है कि जीसस स्कोल्डेड एंड द फीवर लेफ्ट, ऐसा कुछ लिखा है. तो मैं उनको बोलता था कि यार तुम चमत्कारिक वाली बातों में यकीन तो नहीं करते कि बच्चों को बुखार और तुम बोलो ए बुखार तू दूर हो जा, मैं तुझे आदेश देता हूं, और बच्चा ठीक हो गया. क्या तुम ऐसी बातें में यकीन करते हो? अगर करते हो तब मुझे बताओ, तब तो तुम्हारा कहना ठीक है कि यार तुम हकलाना तुम्हारा जो है ये इससे कॉन्फिडेंस इशू. तो ऐसे एग्जाम्पल्स लो और उनको फाइट बैक, समझाओ उनको. ये आप कर सकते हैं. थिंक ऑफ इट एज ए कम्युनिकेशन चैलेंज. कम अप विद फनी एग्जाम्पल्स. ऐसे एक बार स्टैमरिंग को समझाने के लिए मैंने एक आदमी को एग्जाम्पल दिया था. मैंने कहा था यहाँ पे तुम्हें किसी ने चाकू मारा था, चाकू का निशान यहाँ पर है, तो तुम्हारी जिंदगी कुछ फर्क पड़ेगा? उसने बोलेगा नहीं, अब तो वो भर गया है जख्म, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बोला भाई चाकू का निशान तुम्हारे माथे पे अगर हो तब कुछ फर्क पड़ेगा? सोचने में लग गया वो. उसने बोला कि नहीं, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन मैंने कहा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि तुम नौकरी के लिए जाओगे, लोग पूछेंगे तू चाकूबाज यहाँ कैसे आ गया, तुझे कौन नौकरी देगा, तू तो चाकू चलाता है. ठीक है. तो चाकू का निशान यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में कितना फर्क है? हालांकि निशान वही है, और उससे किसी की मौत नहीं होती, क्योंकि वो भरा हुआ जख्म का निशान है. तो मैंने उसको समझाया कि स्टैमरिंग इसीलिए हमें प्रभावित करती है क्योंकि वो सबको दिख रही है, सबको सुनाई पड़ रही है. अगर वो यहाँ पे छुपी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी. तो ऐसे अपना दिमाग लगा के आप लोगों को समझाओ, अपने दोस्तों को अपनी बातें. आपके दोस्त भी अपनी समस्याएं आपको समझाते होंगे कि आज रात में घर क्यों नहीं लौट रहा हूं. आज मेरा बाप डंडा लेके बैठा हुआ है बाहर मुझे तोड़ने के लिए. तो जैसे वो अपनी समस्याएं समझाते हैं, बताते हैं, वैसे आप भी समझा सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. और ऐसे ही लगे रहना है. और जब प्रैक्टिस आप करें तो आप ये सोचना कि मैं एक तरह का माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कर रहा हूँ. आई एम पेइंग अटेंशन.
I'm paying attention here.